ये मेरे नबी का पेशा था, तो इससे अच्छा पेशा कोई नहीं है। तो आप सब लोगों को अपने आप पे प्राउड होना चाहिए कि आपने वो पेशा किया जो कि मेरे नबी का पेशा। तो दूसरा जो है, शुक्रिया अदा करता हूँ जो जिन लोगों ने यहाँ पर बुलाया, और उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, स्विफ्ट का और चेन स्टोर एसोसिएशन का। तो मैं सना की सवाल की तरफ आता हूँ। जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी जो है उसके बगैर तो आप समझें कि कोई चीज़ मुमकिन ही नहीं है। और अभी मैं लास्ट वीक कतर में था, इसी दिन, तो वहाँ पर जो मैंने देखा कि पर कैपिटा जो रिटेल स्पेस है फॉर द कस्टमर, वो दुनिया में सबसे बड़ी है। 2.4 मिलियन उसकी आबादी है दोहा की, और इतनी ज़्यादा स्पेस थी क्योंकि दे नो के पाकिस्तान में यानी दुनिया में इसमें गुंजाइश है। तो टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, टू द पॉइंट बात कर देता हूँ मैं। टेक्नोलॉजी में 2 साल पहले न्यूयॉर्क में गया, मेरा बेटा भी गया, हमने वहाँ से रिटेल के लिए देखी बहुत सी चीज़ें कि रिटेल में क्या क्या टेक्नोलॉजी आ सकती है। तो उसके लिए कल्चर को अडॉप्ट करना पड़ता है, जो थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता होगा, लेकिन इन नेक्स्ट 2 ईयर्स। और उसकी टेक्नोलॉजी की मैं थोड़ी सी बात अगर लंबी कुछ हो जाएगी, लेकिन मैं बता देता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे पहले जो स्कैनिंग लेके आया था वो मैं लेके आया था 1989 में सिंगापुर से। मैं सिंगापुर गया तो मुझे किसी ने कहा जी कि एक ऐसी चीज़ है जिसको आप आगे रखें तो वो प्रिंट कर देती है। उससे पहले हमारे लोग जो थे वो बोलते थे और मुंशी टाइप के लोग बैठ के उसको लिखते थे। 80s की बात कर रहा हूँ। तो ये एक्सपीरियंस मैंने खुद किया कि मैं सिंगापुर गया तो वहाँ से मैंने एक स्कैनर खरीदा, स्कैनर को मैं लेके आया, स्कैनर स्कैन करनी शुरू की प्रोडक्ट। फिर उस ज़माने में कराची में आगाज़ होता था, उसने मुझे कहा ये तुम क्या ले आए हो, इतना बड़ा सा स्कैनर था। सो जैसे टेलीफोन मोबाइल शुरू में आया था, तो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के बगैर तो कुछ भी नहीं है। और अगले 1 साल में और 2 सालों में, बल्कि दिनों में, टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा दुनिया में आ चुकी है। वहाँ पर तो एक ट्रॉली में बैठे बैठे चीज़ें स्कैन हो जाती हैं किसी भी डिपार्टमेंटल स्टोर में या सुपरमार्केट में। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मैं समझता हूँ कि वो पार्ट एंड पार्सल है हमारे फ्यूचर का। दूसरा सवाल करें, मैं फिर चीज़ें कुछ कहना चाहता हूँ। आई थिंक बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो अभी भी डिपार्टमेंट ग्रोसरी स्टोर्स को अपनाना चाहते हैं और वो बिजनेस में जाना चाहते हैं, तो आई थिंक दैट रियली एड्रेस दैट। एक और चीज़, क्योंकि आपका सेशन फ्यूचर के हवाले से था, आपके ख्याल में अभी जिस हमने एक चीज़ देखी और अब घरों में ये बात भी की कि अलफता को इतना वक्त क्यों लगा कि वो लाहौर से कराची जाए? दिस इज जेनेरिक क्वेश्चन, व्हाट टुक यू सो लॉन्ग? में मुझे अच्छी तरह याद है, गवर्नर इशू तो बाहर होते थे, तो मैं एक दिन बैठ, मुझे ईयर का नहीं अंदाज़ा, 2008-9 होगा, तो मैं लंदन एम्बेसी में, पाकिस्तान एम्बेसी में बैठा था। वहाँ पर डिप्टी हाई कमीशन मेरा क्लास फेलो था, तो मुझे उन्होंने अशरफ अब्बास साहब से मिला दिया। तो उन्होंने कहा वाई नॉट इन कराची, तो मेरा यहाँ तक हल्का आके रुक गया कि आपकी वजह से। मैं डरता था कि MQM की वजह से ज़माने में जो भी हालात थे जैसे थे, तो मुझे पूछते क्यों नहीं आए। तो कराची इज़ अ बिग सिटी, कराची इज़ द हार्ट ऑफ पाकिस्तान। तो अभी इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में हम कराची में 2 सालों में 2 या 3 वेंचर इंशाल्लाह खोलेंगे। तो मैं थोड़ा सा रिटेल की फ्यूचर की बात कर लेता हूँ, जो अभी बात की उन्होंने, जिसका जो मेन टॉपिक है। मैं बहुत ज़्यादा मूवीज़ नहीं देखता, लेकिन एक मूवी मैंने देखी थी, उसमें कुछ कह रहा था बंदा कि पार्टी तो अभी शुरू ही हुई है, पार्टी तो अभी शुरू हुई है। तो पाकिस्तान में तो पार्टी भी शुरू नहीं हुई। जितना यहाँ पर माशाल्लाह एक्सपोजर है पॉपुलेशन का, जितना यहाँ पर पोटेंशियल है, अभी तो हम उसका 5% भी नहीं ले रहे रिटेल में। और जितने ये जो लोग, जितने भी माशाल्लाह बड़े ब्रांड्स हैं, सफाई, खादी, और जितने भी लोग हमारे पास बाकी लोग भी हैं, सबके नाम फर्द फर्द लेने मुश्किल हो जाएंगे। तो इन लोगों ने, ये मैं इनको मुजाहिद कहता हूँ, ये पाकिस्तान में पिछले 5 सालों में काम करना आसान नहीं है, बिजनेस फ्रेंडली चीज़ें नहीं हैं, लेकिन पॉलिसीज़ तो हर गवर्नमेंट ठीक बनाती है। मैं किसी गवर्नमेंट को भी पाकिस्तान के खिलाफ तो कभी नहीं बोल सकता कि ये वो पाकिस्तान के खिलाफ है या कोई गद्दार है, ऐसी बात तो कभी ना कहना चाहिए, ना है। तो पाकिस्तान में थोड़ा सा पॉलिसी के साथ कोऑर्डिनेशन की कमी है। कोऑर्डिनेशन जो होती है पॉलिसीज़ की, उसको अडॉप्ट करने के लिए जो हमारी मशीनरी है उसमें बहुत ज़्यादा गैप है। क्योंकि अभी बता रहे थे मॉल की लोग हैं और बाकी लोग हैं, आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन चेंज की मस्ट है,
क्योंकि बिल्कुल ठीक है राना तारिक साहब की किसी जाए बिल्डिंग में बिल्डर्स को तो 9 फुट की वो बना देते हैं। तो मैं जैसे फेज 5 में एक आई डोंट नो मुझे नाम नहीं ज़हन में आ रहा, डीएच ने बनाया हुआ है एक मॉल फेज 5 में लाहौर में। तो मैंने उनसे कांटेक्ट हुआ, जब मैंने उनका जी इसको चेंज करें, आपकी ये चीज़ें गलत हैं, ये चीज़ें गलत हैं, इसमें लोगों के लिए जो कस्टमर फ्रेंडली नहीं है, तो उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। तो मैंने उनसे अपना कांटेक्ट कैंसिल कर दिया, जिसमें ब्रिगेड साहब नाराज भी हो गए। तो मैं कहता था कि ये मुमकिन नहीं है, जब तक आप कस्टमर को एक्सपीरियंस नहीं देंगे कस्टमर नहीं चलेगा। जैसे जो रिटेल बिजनेस है ना, इज जस्ट लाइक एन अनियन। अनियन जैसे होता है, उसकी मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं। उसमें जो पहला लेयर होती है रिटेल बिजनेस की, वो बुटीक बिजनेस होता है, जिसमें बुटीक बिजनेस आप समझते हैं जो बहुत हाई एंड होता है। एक वो होता है, मैं जल्दी क्विकली कहूँगा ताकि लोग बोर ना हो। दूसरी लेयर होती है जो हाई एंड डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं या सुपरमार्केट्स होती हैं या हाई एंड फैशन स्टोर्स होते हैं बड़े साइज के, जैसे खादी के बड़े स्टोर्स हैं, मेरे भी कुछ 1.5 लाख स्क्वायर फीट के स्टोर्स हैं। तो एक वो चीज़ होती है। उसके बाद आपके एक पैमाने साइज के स्टोर्स होते हैं जो आपके छोटी कम्युनिटी के लिए चलते हैं, वो एक होते हैं, जैसे किसी ज़माने में मुस्तफा स्टोर सिंगापुर में हुआ था। फिर एक होता है जो आपके कॉर्नर स्टोर्स होते हैं, उस पर चीज़ें चलती हैं। फिर आपके बाद आपके आउटलेट मॉल्स होते हैं, इससे चीज़ें होती हैं। फिर उसमें आजकल सबसे बड़ा जो सेगमेंट है ई कॉम का आ गया हो। सो ये तमाम सेगमेंट्स हैं जो रिटेल के हैं, और हर कस्टमर की हर जगह पे मुख्तलिफ सोच होती है। अब मॉल्स जो हैं, आज भी 8 महीने पहले मैं एक मॉल खुला था अभी दोहा में, मैंने देखा, वो उसको देख के मैं एक तरह का मुंह में उंगली डाली। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट थी और लोग बहुत कम थे, लेकिन वो क्यों? मॉल कभी भी बिजनेस कभी ख़त्म नहीं हो सकता, चाहे जितना मर्जी ई कॉमर्स में लोग आ जाएं, कुछ हो जाए, मॉल का एक्सपीरियंस एक अपना है। मॉल के एक्सपीरियंस का जो लोगों को आदत है, वो कभी घर बैठ के शॉपिंग नहीं कर सकते। जिन लोगों को नई नस्ल को घर बैठ के डिजिटली, नेचुरली वही लोग बहुत पढ़ रहे हैं वो भी, लेकिन हर आइटम आप डिजिटली नहीं मंगवा सकते सिवाय अपैरल्स के, परफ्यूम के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, कुछ शूज़ वगैरह के। बाकी जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, होम डिकोर, क्रॉकरी, फूड, नॉन फूड, बहुत सारे लोग खुद फील करके लेना चाहते हैं। तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। दुनिया में अभी भी मॉल चल रहे हैं और नए नए मॉल हो रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला रिटेल बिजनेस जो है इसका पाकिस्तान में बहुत अच्छा मुस्तकबिल है। और पाकिस्तान में आपको बिलीव करना चाहिए, खासतौर पर जितने रिटेलर्स यहाँ बैठे हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग जो हैं चींटी की तरह होते हैं। हम एक जगह पे चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर गिरते हैं, कभी हौसला नहीं हारते। तो इंशाल्लाह जीत आपके मुकद्दर में है। क्योंकि अभी भी जितने मेरे बड़े माशाल्लाह लोग जिन्होंने खोले हैं, आजकल पिछले 6 महीनों में, 8 महीनों में, मेरे भी 33 ब्रांचेज में मैं 5-6 पे नुकसान कर रहा हूँ, तो मैं उसमें हौसला नहीं हार सकता, क्योंकि कॉस्ट ऑफ बिजनेस बहुत बढ़ गया। ये वक्ती है, 6 महीने में, 1 साल में ठीक हो जाएगा। सो एज ए पाकिस्तानी वी शुड बिलीव इन आवरसेल्फ, वी शुड बिलीव इन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान से अच्छी जगह कोई नहीं है। मैंने पूरी दुनिया घूम ली, 140 ममालिक देख लिए, पाकिस्तान से अच्छी जगह कोई नहीं है। चाहे जितने मर्जी बुरे हालात हो जाए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है और यहीं से हमने सब कुछ कमाया और इंशाल्लाह यहीं पे कमाएंगे। शुक्रिया अनीस साहब, आपने आई थिंक सारे टॉकिंग पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। आपकी प्रेजेंस का बहुत शुक्रिया ऑन बिहाफ ऑफ स्विफ्ट, ऑन बिहाफ ऑफ चेंज एसोसिएशन पाकिस्तान इन टेराबेज। आई होल हार्टेडली थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आपने जितनी बातें की वो आई होप इन सब लोगों के लिए मुफीद साबित होंगी। बहुत शुक्रिया आपका। ओवर टू यू नायान, एंड थैंक यू एवरीबडी। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अनीस साहब। आपकी बातें हमेशा ही दिल को लगती हैं, एक उम्मीद दिलाती हैं, एक पॉजिटिविटी से भरपूर होती हैं। थैंक यू सना फॉर द सेशन। नाउ वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। हमने सुबह रिटेल से और मार्केटिंग से और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी बातों पे हमने सुना है, लेकिन एक चीज़ हमने अभी तक नहीं सुनी है, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या है और आपके लिए क्या कर सकता है और आप उससे कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। वी हैव अ वेरी गुड एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट, सिमेट्री ग्रुप के, ही इज़ द COO मिस्टर उज़ैर अहमद। ही विल टॉक अबाउट सोशल मीडिया फॉर रिटेल। उज़ैर।
Assalamu alaikum. Good afternoon. Can everybody hear me very clearly? Just raise your hands. Okay, cool. So first of all, thank you Terabez and thank you Chain Store Association of Pakistan for providing me this opportunity to take you through some of my thoughts on the matter. Uh, we've talked a lot about technology. We've talked a lot about real estate, and we've talked a lot about malls and activations and so on and so forth. So I'm not going to spend a lot of time talking about what happens in technology and what's the role of data is going to be. I'm going to keep it very, very simple. Day before yesterday, I found my 12-year-old niece. She was going through my phone and she was browsing a lot of these things that she wanted through my Facebook and my Instagram. And then I asked her, why are you actually doing it? So very simply, she replied, "K, if I'm going to do this, you're going to be delivered these targeted ads at the end of the day. And you may end up buying these products from me." So that's how communication is being reshaped by digital in the current day and age in Pakistan and globally as well. So let's just very quickly have a look at how the social media landscape looks like in Pakistan. So हम बहुत सारी बात कर रहे हैं real estate की. We've talked a lot about what's happening in the malls and access to the consumer. Social media is one place that gives you access to consumers and customers throughout the day. 24/7 you have access to these customers, at least 71 million of these people sitting out on social media platforms in Pakistan. The biggest social media platform we have in the country is YouTube. Then we have Facebook, and very recently we've seen the rise of platforms like Instagram and TikTok and Snapchat. What's important to understand is the fact that a lot of our brands are there on social media. A lot of these brands are using Instagram. A lot of these brands are actually using Facebook and so on and so forth. What's really important to understand is the fact all these platforms need to have a specific role as part of your marketing journey or as part of your marketing efforts. So gone are the days when we used to have a one size fits all social media strategy कि हमने जी Facebook page बना लिया, हमने Instagram profile बना ली और सारी चीजें जो हम Facebook पे डाल रहे हैं, we'll replicate all of that on our Instagram profile at the end of the day. That's not how it happens. You're catering to a very diverse set of audiences. You're talking about Gen Z, you're talking to millennials, you're talking to higher age brackets as well. And all of these people have different and very varied needs during their online consumer journey. And how this online consumer journey looks like is something that you need to ponder upon while devising your social media strategies. So for instance, if I have to target Gen Z audience, probably TikTok is the way to go for me. And I wouldn't really look at any other platform at this point in time. Or if for that matter, if I'm talking to millennials, then probably at the end of the day, I'll, make Instagram a part of my strategy. So it's very important for brands to sort of understand what's the purpose of which platform that they're going to deliver through their marketing strategy to the consumers. Then comes the content bit. हम क्या करते हैं and what we as advertisers and as brands and marketeers, what we tend to do is we adopt a very one size fits all strategy like I mentioned before. That's not really the way to go when it comes to modern day consumers and when it comes to modern day advertising on social media. So you have to be very careful in sort of understanding these platforms and the user behavior on these platforms. So for instance, if I'm going on YouTube, I'm probably looking for entertainment. So your content needs to be entertainment driven at the end of the day. Or for that matter, if I am looking for something on Facebook, my behavior might be completely different to what I'm doing on YouTube. So you need to again adapt and you need to sort of change your content strategy at the end of the day based on these platforms. Then we've talked about a lot about real estate. We've talked a lot about malls and stores.
what's really important to understand is your social space or your social media channels are also your storefronts. And these are the biggest real estates for you, the digital real estate, I would call it, that you can get at any given point in time to target your consumers. Surprisingly, we've also talked about e-commerce a lot, but nobody touched upon the fact that social commerce is the way to go moving forward, because the user is actually spending most of their time online on these social media platforms. So the social media actually acts as a mall for your brand, right? And the more effort you put into make your content look good, make your your advertising initiatives look good, the more there are chances that you'll end up redirecting those consumers to your social platforms, and eventually from there you will be um, that will eventually lead to your sales. So it's really important for us to sort of understand that where the discovery for the consumer is happening. So for instance, in US, TikTok has become the largest search engine, and it has overtaken Google in contribution to searches for Gen Z audiences. So it's also important to understand that in Pakistan, this trend actually exists, especially after the advent of COVID. And during COVID, a lot of people started searching for these products and goods online on these social platforms. So that behavior has sort of changed. So in order to be discoverable to the consumer, in order to be available to the consumer, it's really important for us to understand the role of social media and how we can sort of utilize our channels as a real estate for ourselves, and eventually use them for social commerce to drive sales for our brands. Then, with all these social platforms coming up, we've got YouTube, we've got Facebook, we've got Instagram and TikTok and whatnot. It's also really important to understand who the modern day consumer is getting influenced by. And the modern day consumer is actually relying a lot on these influencers, a lot of these key opinion leaders that they sort of, get influenced by. So I tell this to a lot of my clients. I tell this to a lot of the brands that we work with, be it the technology space, be it the FMCG space, or anything like that. You gone are the days when जब एक सेलिब्रिटी को देख के लोग जो हैं वो कहते थे कि अच्छा जी हम इससे इन्फ्लुएंस होंगे. An influencer sitting online with a follower base of 2,000 people can be more influential than somebody like Mahira Khan to a certain set of audience. So it's really, really important for brands to understand the use of social media, the need of using these influencers on their social platforms. And एक चीज especially with respect to the retail industry, what I've seen over the period of time is that a lot of you brands actually focus on very hardcore branded content with influencers. That certainly doesn't really work when it comes to influencer marketing. What needs to happen is you need to sort of build a storytelling approach towards your marketing initiative. And in the following slide, I'm going to take you through a few videos of how some of the international brands are doing it. And those examples are pretty much best in class in how influencer marketing should be done. What we see in Pakistan with fashion brands specifically is that as Khadi, probably at the end of the day, and you'll take an influencer on board and you'll make that influencer make your Khadi ka joda, and at the end of the day you will make an endorsement out of it. That is not certainly the way to do influencer marketing. These are just some of the examples I'm going to take you through in the next slide. Is the audio working for the presentation? Okay.
So it's all about giving them an experience of the brand with the favorite influencer that they have. One thing that has recently started happening with respect to influencer marketing globally is these influencers are actually being used to sell your products from their own platforms. That is something that is certainly not happening in Pakistan, and it's something that we need to sort of focus on, as especially as retail brands, because these examples are actually going to show you how that is being done globally. So you see, you are getting a product experience, you are getting the brand experience, but at the end of the day, your product or the content that you're developing is serving a need for the consumer. And that is how, you know, that is what influencer marketing is in its true essence. And lastly, we have this other video. I'm going to take you through if it plays. Yeah. Bust this roof down. Fella. So you see, it's all about creating that aspiration for your consumers, and at the end of the day, it's all about creating that memorable experience um, for your consumers. So it all boils down to the fact okay, what sort of social or what sort of online experience is that we are creating for our consumers. And it's really important to understand the importance of social listening, because that is something that is going to give you data. That is something that is going to give you insights in your consumers' minds. We need to constantly listen to what they're thinking, what they're saying, and what their perception is about our products and services. And at the end of the day, all of this is going to lead us to actionable insights. Now, these actionable insights can be turned into, at the end of the day, a new range for a fashion brand, or for that matter, a new product category altogether for any retail brand in Pakistan. And this is something that globally brands are doing day in and day out. And it's something that we as Pakistani brands are actually kind of lagging behind and need to sort of focus on. And lastly, it's all about providing them a 24/7 customer care experience. Because as brands, we a lot of times focus on through our social channels कि जी सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक हम जवाब देंगे customer का. But there are ways of, and there are tools available, and with the advent of these bots and all, it's really important to provide these customers with a 24/7 customer care experience, because that is something that they demand from you. And in order to be a customer centric brand, in order to have a customer centric approach towards your marketing initiatives with respect to social media and specific, it's really important to think about how you can deliver the right experience to your consumers. And based on these experiences, you need to continuously sort of customize and personalize based on consumer needs. So yeah, thank you so much. Hopefully the session was insightful for all of you. Thank you.
थैंक यू सो मच उजैर। जैसा कि आपने बोला क्रिएट experience for your customers, so you also sort of created an experience for the audience with your presentation. Thank you so much. अच्छा जी, now we have, I know we are all tired, you are also tired, लेकिन बातें इतनी हैं कि वो ख़त्म ही नहीं हो सकती हैं। टॉपिक इतने वास्ट हैं इस रिटेल से रिलेटेड और रिटेल लैंडस्केप से रिलेटेड के ख़त्म ही नहीं हो पा रहे हैं। बट वी आर गोइंग इनटू आवर लास्ट पैनल डिस्कशन ऑफ द डे। द थीम इज e-commerce and growing the pie through customer centricity. I'd like to invite the moderator for the session, Ms. Ariba Shahid, and our esteemed panelist, Mr. Amir Iqbal, who is the co-founder of LAM. We have with us Mr. Muhammad Umar Farooq, who is the CEO of Hanker Technologies. Mr. Heather Aslam, Vice President of Engineering at Swift Logistics. And Obaid Arshad, CEO and co-founder of Jinko Retail. So, Ariba, over to you. Thank you so much. So my mic's finally working. All right, so before we move on to the session, I just want to talk about what customer centricity really is. And basically, it's like building for your customer, keeping the customer at the center of everything you do. Growing up, we've heard the phrase, the customer is always right. This is like taking it to the next level. This is like, the customer is everything. But I want to hear more about you. Okay? And what I'm going to do is we're going to try to keep this discussion as anecdotal as possible. So I hope you guys enjoy it. So let's start off. How has customer centricity helped create a relationship with customers? And how important is creating a relationship with customers? And we could go one by one for this answer. Hello. So this one is working for me. पहले तो I will सुबह लोगों को देखने के बाद the hall was full and I was very excited that probably in the last we'll be discussing about this very exciting topic, but unfortunately सारे लोग चले गए, they must be tired. So regarding the topic is related to e-commerce and customer centricity. So I'll try to restrict my discussion to e-commerce and how we can entice the audience, interact the audience for e-commerce, especially in an environment where the global digital wall is expanding, the new brands are coming up, the existing brand having stringent competition, especially from mushroom brands. Pakistan retail market is right now roughly a $5.5 billion market, and according to Bloomberg and Eurometer, this is going to be a $10 billion market by 2025. This means roughly the digital marketing spend is going to be $1 billion in next 3 years. But how we are utilizing, how we are focusing on that digital marketing spend. I was focused on Uzair's presentation about digital marketing, the way focus moved from Meta to Instagram, and now he just mentioned the Gen Zs are more focused on TikTok. So what we are doing is whatever we are spending on Facebook now has shifted to Instagram, and now we have to incur money right from the start on TikTok to entice the audience, to increase our digital marketing spend. But the most important point is how we are interacting, how we are identifying our customer base. That is a very important question. I was reading different researches done by McKinsey and Marriott, especially they have done post-COVID time. So Marriott ये कहता है कि post-COVID, after 2020, 70% of their sales is through their members, which is a loyalty program. 70% of their sale is through customers, which are their members. McKinsey ये बात करता है पूरी दुनिया के अंदर कि now is the time for personalized communication. Now it's a time to provide personalized environment to all the customer. Either it's a digital communication or a conventional communication. So customer centricity, especially for e-commerce business, it's very important that we should identify our customer. Who is the customer we are targeting? Men's का ad किसको भेजना है? Female का ad किसको भेजना है? बच्चे के ad के लिए कौन सी target audience है? That is very, very important to identify.
we are spending everything on digital marketing. हम बहुत अच्छे ऐड बनाते हैं, हम बहुत अच्छी कम्युनिकेशन बनाते हैं, बहुत अच्छा कंटेंट बिल्ड कर लेते हैं, बट वो कंटेंट का ऑडियंस क्या है? Especially with even with this high tech environment, the lackness we have is we don't know about our customers. जो कस्टमर आपका एड देख रहा है वो देख क्या रहा है, आप जो पैसा स्पेंड कर रहे हैं किस ऑडियंस के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं. Especially in 2023 post no cookies environment, where privacy, where confidentiality is going to be very important for customers. कस्टमर का डेटा होना, कस्टमर को जानना, उसके उसके बिहेवियर को, उसके इंटरेस्ट को, उसके बाइंग पैटर्न को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. The way Western world has moved to that, unfortunately, Pakistan के अंदर we are not to that level. So I think this is the high time, especially in a high-tech digital environment, where new marketplaces, where new social media platforms are coming up. It's very imperative to understand your audience, know your audience, their buying behavior, their interest, their likeness, when they like to buy, what they would like to buy, कौन सा कलर पहनते हैं, कौन सी कॉफी पीते हैं, कहाँ से जाके ग्रोसरी खरीदते हैं. This is very very important. Hello. Assalamu alaikum. Thank you so much, Retail Chain Association, for inviting us today. The topic is, by the way, my name is Amir Iqbal. I am the co-founder and CEO of LAM. We have a domain by the name of lam.pk, and we are trying to build Pakistan's first and the largest e-commerce store for fashion. So we have currently more than 1,100 retailers and businesses in Pakistan at our platform. So that's what I do. So let's start discussing about customer centric approach. The topic जो आज का हमारा है. मैंने before I starting this topic, let me give you a little bit example about customer centric approach की एक छोटी सी example देके then I'll jump back to the topic. 2007 में मैं एक स्पिनिंग मिल में खड़ा हुआ था, तो मुझे वहाँ पे धागा बन रहा था. वहाँ पे उनके जो एक मेन लीड पर्सन थे, उनसे मेरी गपशप लगी कि अच्छा आप धागे को क्वालिटी किस तरह से बेहतर कर रहे हैं. देन ही स्टार्ट टेलिंग मी कि हमारा धागा दूसरे धागों से, एंड अगेन ये अर्ली डेज थे जब स्पिनिंग और में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आ रही थी. सो दे टेल मी वन थिंग दैट वाज, कहते कि देखिए हमारे पास के धागा है और स्पिनिंग मिल पे धागा चल रहा है और इसमें से मट्टी निकल रही है और हम इसको साफ कर रहे हैं, और धागे की क्वालिटी आपको एक्स दिख रही है. बट दे सेड कि हमने अपनी सप्लाई चेन के शुरू में गए हैं जहाँ से इवन के वो बंदा रुई निकालता है, जिस तरह वो खातून रुई को एक कपड़े में डालती है, जिस तरह वो वहाँ से लेके जाकर एक ज़मीन मट्टी में रखते थे, हमने एंड टू एंड जो उनका सप्लाई चेन था वहाँ पे उन्होंने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जब डालना शुरू की. जिस तरह वो बंदी पहले रुई उठा रही है वो अपने उसमें डालेगी, देन जहाँ पे वो खुले में रखते थे दे मेक शेड्स, वहाँ से वो जिस तरह आता था वो ओपन में नहीं आता था. इवेंचुअली जो जर्नी था वो एंड टू एंड था. सो अगेन मैं अपनी टॉपिक को 3 हिस्सों में यहाँ पे डिवाइड करूँगा. फर्स्ट इज फॉर लाम, बिकॉज हमारे जर्नी के बारे में है. तो फॉर लाम व्हाट इज बीइंग अ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, व्हाट इज कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जो हम लोग रखते हैं. सेकेंड, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच में रिटेलर्स को, ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म को स्ट्रगल्स एंड चैलेंजेस आते क्या हैं. एंड थर्डली, लाम ने ऐसी क्या चीज़ इंप्लीमेंट की थी that has really helped us to be one of the most customer-centric organizations. So first, regarding the point one of my communication, what is customer-centric approach? So I believe that for LAM, it is an end-to-end consumer approach. Like जब बंदा वेबसाइट पे विजिट करता है, वो पहली प्रोडक्ट बाय करता है. सेम इज द केस विद रिटेल. क्या कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच में अगर आपने कभी भी अपनी अप्रोच को अंडरस्टैंड करना है तो यू हैव टू सी फ्रॉम एंड टू एंड. The point they visit you, the point they buy something, the point they rebuy something, and the journey continues. And इसमें भी then the second thing that is the most important thing is how you build your product, your features, your systems to ensure that you are delivering a wow experience to the customer. So I think for me, for us, that is the customer-centric approach. Built an end-to-end system that enables you to give your customers a wow experience. And इसकी डिटेल मैं बताता हूँ आपको. Then second thing is कि इसमें challenges है क्या. मैं
लास्ट नाइट एक हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जिसमें लास्ट ईयर दे टोल्ड कि क्योंकि कस्टमर सेंट्रिक का वर्ड इसको 2 डेकेड्स हुए हैं अभी आए हुए, लाइक इससे पहले हम 90s में कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच की बात नहीं होती थी. सो 2 डेकेड्स होते हुए एंड दे वर उन्होंने रिव्यू किया द कंपनी जिन्होंने क्लोज टू $10 ट्रिलियन की कंबाइंड सेल की हुई थी, एंड दे फिगर आउट कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच जो मार्केटर्स अपने आप को क्लेम कर रहे हैं दैट इज ओनली 14%. अब यहाँ पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है ना कि लोग कस्टमर सेंट्रिक क्यों नहीं है, बिकॉज एक इट इज़ वेरी चैलेंजिंग टू जो जिस वेलोसिटी और जिस स्पेस से सारा कुछ चल रहा है कि उसमें उस डेटे को गैदर करना, देन अगेन सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस आर नॉट देयर, एंड देन एक जो सबसे बड़ी मेरे ख्याल में यहाँ पे इंपॉर्टेंट है जो कंपनीज कस्टमर सेंट्रिक हो नहीं पाती है मेनली ड्यू टू कल्चर. बिकॉज ऑर्गेनाइजेशन कल्चर जब हम बात करते हैं तो एक डिपार्टमेंट का कह दिया जाता है ये हमारा कस्टमर केयर या कस्टमर सक्सेस डिपार्टमेंट है. नॉट एवरी अदर डिपार्टमेंट इज थिंकिंग अबाउट कि आपकी कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच क्या है. सो अगेन वो डिपार्टमेंट वाइज से हाउ द होल ऑर्गेनाइजेशन इज थिंकिंग अबाउट कि पूरा कस्टमर सेंट्रिक का जर्नी क्या है. इस टाइम पे जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है, कंपनीज आर एक्चुअली मेजरिंग देयर GMV, देयर सेल्स और देयर रेवेन्यू. दे आर नॉट मेजरिंग कि उनके कस्टमर की हैप्पीनेस का स्कोर क्या है. एंड आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि बिकॉज एवरीवन जितने भी यहाँ पे लोग बैठे होंगे, जितने रिटेल से ताल्लुक रखते हैं, जितने ई-कॉमर्स से ताल्लुक रखते हैं, हम सबको एक चीज बहुत देखने का शौक होता है कि हम सुबह उठे हैं तो हमारी सेल कितनी हुई हुई है. सो मेरे ख्याल में हम ये चीज बिल्कुल भी नहीं देखते. हम सुबह उठते हैं तो हमारे कस्टमर का हैप्पीनेस स्कोर क्या है, दैट इज द मोस्ट चैलेंजिंग थिंग जो कोई भी नहीं देख रहा होता है. एंड अगेन वी नीड टू देयर गुड नंबर दैट वी नीड टू सी. सो लास्ट पॉइंट ऑफ माय टॉक इज कि लाम में हमने ऐसा क्या किया, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टू बी वन ऑफ द मोस्ट कस्टमर सेंट्रिक कंपनी that we can be. First, we defined 3 goals because obviously हमारे लिए for us one is obviously every company has to do sales. Second one is कि जो हमारे कस्टमर हैं जो एंड पे हैं जो they are buying something, कस्टमर का NPS, मैं इस वर्ड पे बाद में आता हूँ. एंड देन थर्ड थिंग इज पार्टनर NPS. सो आप हमारी कंपनी में किसी भी बच्चे को उठाकर पूछेंगे ना कि कंपनी का गोल क्या है, ये बेशक वो वेयर हाउस से बिलोंग रखता हो, ये बेशक लीडरशिप में बिलोंग रखता हो, सो दे विल टेल अस these things. हम KPI 3 मेजर करते हैं, GMV, कस्टमर हैप्पीनेस एंड पार्टनर हैप्पीनेस, जो पहली चीज है. सेकंड चीज, इन चीजों को बिल्ड करने के लिए द फर्स्ट थिंग दैट वी डू इज अगेन हाउ डू यू इंप्रूव एनीथिंग, हाउ डू वी इंप्रूव आवर सेल्स, बिकॉज वी मेजर इट. हम सुबह उठते हैं, फॉर एग्जांपल 100 रुपए की सेल है तो देन वी ट्राई टू विश के वो 110 रुपए की हो जाए. सो फर्स्ट थिंग टू बी कस्टमर सेंट्रिक फॉर एनी कंपनी इज फर्स्ट स्टार्ट मेजरिंग इट. तो दैट्स व्हाट वी डू, वी स्टार्ट मेजरिंग इट. सेकंड जो हमने कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होने को किया, we start democratizing our customer score. आप जो हमारे पार्टनर्स हैं, we develop an app जिसमें जब वो ऐप खोलते हैं, जब 1100 प्लस पार्टनर्स है we have, so first they don't see sales, they see one thing is customer NPS. मैं NPS को थोड़ा सा आपको बता देता हूँ. NPS is net promoter score. कभी भी कस्टमर आपको रेटिंग देता है, हम रेटिंग को 3 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. दैट्स एन इंटरनेशनल सिस्टम. फर्स्ट वी कॉल प्रमोटर, सेकंड वी कॉल डिमोटर, थर्ड वी न्यूट्रल. सो NPS इज प्रमोटर लेस डिमोटर. सो जिस तरह एप्पल कॉर्पोरेशन, उनका NPS सिस्टम 67 है, गुची का NPS सिस्टम 72 है. सो इफ रिटेलर्स और कंपनीज दे हैव टू मेजर देयर कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, they have to first measure their customer NPS. So that's what we started doing first. And then on that basis of that NPS, we start democratizing. LAM is the only company in Pakistan जिन्होंने एक NPS के लिए customer excellence department we start building it. We build that customer centric department जिसका काम ही दोनों ends पे एक NPS को maintain करना है. And then eventually जो हम अपनी regular meetings भी करते हैं उसमें we make sure that every individual is talking about their customer journey. Every individual is talking about their customer success. Third point, what we did is even in our hiring processes, we start asking people the right questions के उनके लिए customer approach कितनी important है, because the innovation या जितनी भी चीजें होनी है, अगर वो customer centric approach से हो रही हैं तो then we can only grow. मैं आपको एक by closing the note, I'll share you a small summary. We have 1100 partners जिनके customer NPS अगर 10 means या 0 means absolutely low, 100 means is absolutely high. So when we see a retailer or a brand जिनका customer NPS score, happiness score is more than 80, we see automatically their sales are growing. Customer एक बार उनसे ले रहा है and वो बार बार repeat buy करी जा रहा है. हमारे बहुत सारे e-commerce platforms, websites और retailer को सबसे बड़ी problem आती है customer retention की. वो कहते हैं यार customer एक बार आता है.
Amir, I have other questions. Oh, You've sorry. answered them all. Okay. So again, so I think that measuring customer NPS will really help you guys, will all help the retailers to grow. Thank you so much. Thank you so much to everyone जो भी बैठे हुए हैं अभी तक. So okay, so I think first of all, क्योंकि I'm part of logistics, so logistics perspective से when we talk about a customer, it's either the B2C customer जिसको हम जाके deliver करे होते हैं अपने parcels, और हमारे जो brands हैं वो भी हमारे, they are our customers. But when we talk about the B2C customers, अगर हमारी परफॉर्मेंस और हमारी कस्टमर सपोर्ट अच्छी नहीं है तो चाहे ब्रांड बहुत अच्छा भी हो तब भी customer won't be happy. Similarly, if the payment solution that we are using, if it's not good enough, इसका मतलब ये होगा customer is still not happy. So customer happiness और custom simplicity के लिए ज़रूरी है कि as a industry we should all be working together, क्योंकि वो same customer है जो payment भी कर रहा है, वो same customer है जिसको order उसके घर पे deliver भी हो रहा है, जो retail outlet पे भी जा रहा है. कहीं पे भी एक मिसिंग पीस होगा, so the customer would not be happy. So as an industry, I think we should, as Amit Saab mentioned as well, we should have these customer excellence or customer happiness officers. We should have departments that should be dealing with customer happiness, and it varies from company to company. As part of the ecosystem, every a member of the ecosystem has a different role to play. So I think that is pretty critical. Secondly, how at Swift Logistics we make sure that we are customer centric. इसमें एक activity we performed, like we went house to house. The management team went house to house. We delivered orders on our own. So usually our riders go, and we do not get to hear what the real information is, the real conversations that are taking place with the customer. So we went out house to house, door to deliver orders, and we made sure that we hear out from the customers themselves and see what's going on. So कई दफ़ा जो information हमें मिलती है वो about merchant के बारे में होती है कि हमें गलत order मिला, कई दफ़ा हमारी performance के बारे में होती है, but we listen it out. We have added some features in our mobile apps where customers can share their feedback if they cancelled an order. So ये सारा data, ये सारी information, I think what's critical is that we start capturing this information in a digital fashion. अगर हम इसको capture करने लग जाएंगे, so customer centricity would start, and we can take action in a digital way. जब तक ये conversations, people to people conversation हो रही होगी, which would be a rider talking to a customer, or our maybe account management team talking to the merchant, it wouldn't give any digital output. So we have to start capturing all of those conversations in some way in a digital fashion. That I think would help us out, move more towards a customer centric approach. Thank you. Hello, Assalamualaikum. Thank you for the opportunity. So I guess customer centricity is one of the important aspect, as because e-commerce is growing, and in this digital space, especially, you should not have that much of boundaries. So essentially, every brand needs to work on every brand need to be customer centric, because it's something which is going to add value in your brand. But I think the main point nowadays is how to be customer centric. So I feel like if you want to be customer centric, you need to have a seamless experience. You need to provide brand need to provide seamless experience to their consumer, to understand from where consumers are coming, what is their need, because this audience segmentation is constantly getting changed, just because we have a lot of population which falls under the Gen Z and the millennials. So 40 to 50% of time, like every one of us, they are spending time on the multiple platforms like Facebook, Instagram, LinkedIn. All of them are providing the personalized experience. So our mind psychologically is automatically tuned. So when we open website, we want a system to take a decision, and we just want to approve how you are going to take it. So if you want to take a decision for the consumer, you need to understand the buying behavior of a customer before, after, and if there is a lag, and if there is a gap, why is it? And before this thing, you need to connect. I guess merchant need to connect their
multiple selling channels, their website, their brick and mortar, each and every points customer is connecting across all the platform. So you can have the visibility, because I feel like the one of the important aspect is that most of the merchant, they have very good customer retention. But even though they have very good customer retention, such customers are being such customers are coming to your website again and again from the marketing platforms, and you are paying for it. Why? Because data is not being utilized. I believe this is the important aspect and the major gap in the market, that data is not being utilized, data is not being planned, and data is not being utilized to connect the customers in a way they want. Because we have been doing this thing from last like 2 to 3 years, and we have seen massive results, especially by using data, how to be customer centric with the consumer. So this is something I believe which is the important aspect, and the market should focus on this thing. And there are certain steps which brands need to take. And I guess we have a lot of case studies for this thing, that if you become customer centric, you can have more better brand positioning, and you can directly target your consumer, your customer. So you should not rely all the time on the social media platforms, because I feel like it's a paid relationship all the time. So how you are going to make it direct? If you focus on this thing, how to be customer centric. So this is, I guess, the main aspect. If you want to be customer centric, use your data. Thank you. So, thank you, the panelists, for those answers. We ended on the note of data, right? So, to add up to that, at this point in time, your phone probably knows you better than anyone else. Like, there's a time when you would say that your mom knows you the best. I don't think that's the case anymore, because the way data is being used from our behavior on our phones or our digital presence is increasingly growing at a rapid pace. How important is it for businesses now to use data to enhance their customer centricity, and how has that grown in the digital age? Like in the past, when we had brick and mortar retail, it was very different when you would build for customers. But now in the digital age, you have to build online for them and offline. So how has that experience been? So, Reba, let me share an important discussion I had with Isfandiyar during tree break. So we are discussing about the digital expansion, various platforms. We were discussing about that. I'm mentioning again, according to Eurometer and Bloomberg, this e-commerce market is going to be $1 billion by 2025. Roughly, all retailers are here. Some of them are spending 7 to 8% on their performance marketing. Some of them are incurring 10, 11%, and few of them are even incurring over 10% in most of the cases. So if I can anticipate, we are anticipating that in Pakistan, the performance marketing budget is going to hit $1 billion by 2025 if we need to hit $10 billion sale. Is this workable? Forecasting the current situation where we are lacking with the dollars, there's a highly likelihood that such amount is not going to be outflow from Pakistan, $1 billion in 2025. So what I am anticipating and what we are pushing to retailer in Pakistan, that this is the time they need to focus on customer identification rather than going for assumption based performance marketing, rather than going for funnel based marketing. They need to know exactly who are the end customer, and probably for that we need to build local platforms, and someone has to play an anchor role to build that platform. So all the money should be in the same ecosystem, the way China has built the ecosystem. In China, no one is marketing on Facebook, they have a WeChat. They are marketing through that platform, they are communicating through that platform. So this is imperative for us. We need to think about it right now to build such kind of things. एक मैं एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, आमिर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था
how customer centricity is important. So I born and raised in Karachi. I'm very fond of food from one of the famous retail chain there, and a very stereotype person from last 14 years. Whenever I visited them, I always ordered spicy chicken basil. I was there a few months back, and after I finished my food, the waiter came to me and with the accent he said, download this app, you will get 20% off. Without, I am a customer who is eating yes by paying the full price. So my bill was 4,000 rupees. They slash it down to 3,200 rupees. So rather than offering me a discount or any offer or any other product which I am not fond of, maybe if they can offer me a discount on Belgium chocolate cake, I increase the bill size. They offered me a discount on the product which I am continuously eating from last 14 years, because they don't have information about my eating pattern, my spending pattern with that brand. So that is the dilemma. That is the value of customer data and provide customer centric services and product. As B2B, sorry, as B2C, you would have like great experiences on this as well. A question is how it has helped us, customer centric approach to grow our business. Basically, how does data help, and how does it help Okay. in offline and online? Okay. So regarding how data has helped us, I think that first regarding customer centricity, जिस तरह अभी हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, first you need to have a matrix to again no offense to anyone, but I think that even the top level companies that we see today or meet today, so they don't see their customer centricity data that the world call is that as customer happiness score, or we call it an NPS. So we started measuring NPS like 12 months back. At that time, we didn't knew कि हम हमारे customer हमसे कितने खुश हैं. And again, at that time we had like 600 or 700 brand that are on our platform. But once we start implementing that, जिसपे हमने हर customer से उसका एक rating score लेना शुरू कर दिया. And rating is on a different level के product के बारे में, experience के बारे में, journey के बारे में, how likely they are to buy it. That literally changed everything for us. We start seeing patterns के returning customers जिनके NPS score high हैं, वहाँ पे continuous repeat चल रही हैं, वहाँ growth है. जिनके NPS score कम है, again it was a shocker for me when we start measuring the NPS, और हमने अपना पहले overall as a company अपना NPS measure किया, so it was pretty low. It was not even 10. So imagine अगर आपका customer happiness score आप एक measure करना चाह रहे हो कि it should be 65 plus or 70, but again this gave us a very good insight that we are doing many things wrong. So again, after gathering that data और उस डेटा को इस इंफॉर्मेशन पे कंप्यूट करते हुए कि डिलीवरी टाइम पे कितने कस्टमर्स क्या फीडबैक दे रहे हैं, प्रोडक्ट रेटिंग पे क्या फीडबैक दे रहे हैं, एक्सपीरियंस पे क्या फीडबैक दे रहे हैं, बाइंग एक्सपीरियंस पे दे रहे हैं, it was mind boggling for us. And when we start, obviously when you start measuring something, you start improving it. So when we start improving that journey now, so हमने डिलीवरी टाइम फ्रेम कम करना शुरू किया. लेट्स से हम एवरेज 5-7-8 दिन में शिप कर रहे थे, वी टुक बैक टू 2 दिन, 2 days, and then we take back to now we are shipping in within 2 hours. So again, जो भी चीज we were improving, जिस चीज को मेजर हम कर रहे थे, इंप्रूव करते जा रहे थे, वहां पे हमारी प्रॉफिटेबिलिटी एंड वहां पे हमारी कन्वर्जन रेशियो वाज इंक्रीजिंग. सो आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज लाइक फॉर एनी if we are talking about customer centric approach, that literally we have 10x our revenues just by being one of the most customer centric companies, because again I think that agar aap customer centric approach, because किसी भी business के लिए there are two things that are essentially more important for them. It's for again the bottom line, के how much sales they are doing, how much revenue they are earning. But I think that if every company start measuring their customer happiness index or score is, so I think that we will find combos that we haven't seen before. We will again, there are a lot of online companies that we see, a lot of e-commerce platform, a lot of offline retailers जो आज stuck हुए हैं, they don't know what to do. First,
वो might be they are just having one metrics of their like जिसको KPI को, and that is only their sales or revenue. But I truly believe that if each and every retailer, if each and every online company, they start mirroring their online or offline customer centric approach, this changes everything. It has literally helped us to improve our quality, improve our product packaging, improve our shipping time, help retailer to figure out what are the main issues, fabric में क्या problems आ रही थी, size chart में क्या mistakes हो रही थी. So again, by computing all these 12, 14 pointers, we start improving those pointers. And is again, it has really helped us to be here. So that's from my side. Thank you, Jay. Just so data perspective, say I would share a couple of examples how, as a logistics company, we are utilizing data. So we are talking about customer centricity, and generally, what we think is, how much customers are happy or how well we are serving them. But sometimes there are customers who are, in our case, they are placing orders, but they are not receiving it. So because we are sitting in between different brands and we know कि एक ऑर्डर अगर लाम से आया है, एक ऑर्डर खाड़ी से आया है, और वो एक कस्टमर उन ऑर्डर्स को रिसीव नहीं करता और वो कैंसिल किए जा रहे हैं, सो वी नो दैट पर्सन शुड बी ब्लैक लिस्टेड. So on our end, being customer centric also helps us out in figuring out the black sheeps. कि अगर 10 ऑर्डर्स एक बंदे ने किए हुए हैं और उनमें से उसने 3 रिसीव किए हैं, सो इट मीन्स कि वी हैव टू री-वेरीफाई कि इस कस्टमर को हमने ऑर्डर जाके डिलीवर करना भी है या नहीं करना. उसके अलावा बेस्ड ऑन द डेटा वी फिगर आउट हमारी ऑपरेशन कैपेसिटी कितनी हमें चाहिए, किन एरियाज के अंदर चाहिए. वी नो कि एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर ज़्यादा कस्टमर्स ऑर्डर रिसीव करते हैं, मे बी वी नीड मोर राइडर्स, मे बी देयर आर मोर ऑर्डर्स. So based on the data, as a logistics company, we figure out a lot of things which eventually help out the customers, which eventually saves our time. So using this kind of insights from this data, it really is something that we rely on, and it's something that we have to improve and enhance upon, because as we scale, as more orders come in, manual activity, manual sort of effort to figure out how happy the customers are, or how operationally efficient we can be, it's almost impossible. So utilizing the data on our end, technically we have data lakes enabled where we put all the data at one place, and then we can analyze it in different forms. We have certain dashboards available. So yeah, so data, bottom line, is critical, and as a logistics company, we make sure that we use it, and we are continuously improving and enhancing our data solutions. Thank you. Okay, I feel like data is the something. It's very important. It's new oil, and if you are extracting it, so this is something which is very valuable. And this is not something which is not being tested, which is not being done. As in our company, when we started 2 to 3 years back, we are not a typical ERP company. We are not a storefront. So what we were basically doing, we were collecting data. We were crawling data for the merchant, and we were incorporating such things to make a decision. So what we done, like if I go with the real life example, then brand came to us, they told us, this is the cancellation ratio, this is the return ratio, how we are going to optimize it, how we are going to control it. So what we did, we work on data, and we realize that there are certain points in which we need to set some SOPs and policies, from the order verification to the logistic management, to make couriers accountable at which areas they are doing good, at which areas they are not performing well, to move to shift the businesses throughout. And so at every point we collected data, we informed brand, and we dynamically enable brand to take a decision. So recently in November last year, if I compare this thing, most of the brands cumulative, they were standing on a return rate ratio of like 15 to 70%. But just because of utilizing data and operationally making things viable and dynamic in control of brand, it drops like 8 to 9%.
So data is something, if you need to be customer centric, you need to understand your customer, and you can understand your customer via technology to use data, because constantly you have a customer, their behaviors are changing, there are multiple points across all platforms. So data is something, if you are utilizing it, so you are building your brand. But if you are not utilizing data, and you are typically focusing on the operational processing and the marketing platforms, just to spend money on it and to take a to take a sale, that's not the right approach. Hello. While I do have some more questions, but we are running out of time, I just like to thank everyone for being on this panel. I'd like to thank everyone for listening. But to sum it all up, consumer centricity is essential for making a brand, for creating an experience. But a pivotal role in that comes from data itself. And I feel like we've got a brilliant panel. I just like to thank Amir Iqbal, co-founder at LAM, Mohammed Umar Farouk, CEO, Hanker Technologies, Heather Aslam, VP Engineering, Swift Logistics, and Obed Arshad, CEO, Jinko Retail. Thank you, everyone, and thank you. Thank you so much, everybody. Thank you, Ariba, for a very good session. Thank you, all our panelists. Okay, we spent a whole day here from 8 in the morning, and it's past 6 today. We enjoyed the facilities here. We had this great hall. We had a great meal. We had everything, and that was, and thanks is due to the Nishat Hotel Emporium, who is also our hospitality partner for this event. And as a special gesture, the general manager of Nishat Hotel Emporium, he's here with us, Mr. Kashif Moeed Rabbani. And as a special gesture to the Chain Store Association of Pakistan, Emporium Nishat Hotel is presenting a set of privileged membership cards to the executive committee members of the Chain Store Association. So I would request Mr. Kashif Moeed Rabbani to please join me here on stage. And I will also request Mr. Rana Tariq Mehboob to come and receive this token as a representation of CAP. Ji, thank you so much, Rabbani Saab. And Rana Tariq Saab, I'd request you to please join me here on stage so that we can pass out tokens of appreciation to our panelists and moderator of this last session on e-commerce. Mr. Asad Shafi, would you also join us here on stage? Salman Saab, if you are here, please join us as well. I'd request Mr. Amir Iqbal from LAM to please join us on stage and collect a token, small token of appreciation for your participation in this event. Umar Farooq Saab, we have a memento for you as well. Umar Farooq Saab, please. Haider Aslam Saab. Obed Arshad Sahab.
and of course Ariba Shahid. So after this long and beautiful day, I am not the one who would have be in place to thank you. It would have to be Mr. Asfandyar Farooq from Chain Store Association of Pakistan. Asfandyar, please come up and give the word of thanks. And अस्सलाम वालेकुम। मुझे मालूम है कि थोड़ी देर हो गई है, लेकिन ज़रूरी था कि हम हर चीज़ कवर करें और मैक्सिमम चीज़ों को हम एड्रेस करें। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं वोट ऑफ थैंक्स दूं, तो थोड़ा सा मैं आपका थोड़ा सा और टाइम लूँगा, फिर इंशाल्लाह हम इसको क्लोज़ करेंगे। तो मैं इससे पहले कि मैं शुरू करूँ इस वोट ऑफ थैंक्स के हवाले से, मैं सिर्फ एक छोटा सा एक मैसेज देना चाहूँगा ऑफ ट्रिब्यूट। हमारे रिटेल इकोसिस्टम के एक बहुत एक पायनियरिंग प्रोफेशनल कल अल्लाह को प्यारे हो गए थे। बहुत उनका बड़ा माशाल्लाह कंट्रीब्यूशन रहा है पाकिस्तान की रिटेल इकोसिस्टम में एज अ प्रोफेशनल। उनका नाम अदनान सईद है और वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे और बहुत लोग उनको जानते हैं। उन्होंने खाड़ी के साथ फाउंडिंग टीम में थे, उसको उनके शमून सुल्तान साहब उनकी टीम के साथ खड़ा किया था। काफ़ी साल उन्होंने उनके साथ काम किया। He worked with leading brands such as Sapphire, Sana Safinaz, and then again Khadi, and he had over 25 years of experience building modern fashion retail brands as a professional. So I just wanted to acknowledge him. He passed away yesterday at the age of 53, and he's a dear friend and a member of our retail community. तो बस मैं चाहता था कि मैं उनको हम थोड़ा याद रखें और अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके फैमिली को सब्र जमील अता फरमाए। उसके साथ साथ मैं सिर्फ जो आज थोड़ी सी बात करना चाहूँगा आज के इवेंट के बारे में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा ये अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रहा है और वो आप लोगों की वजह से हुआ है। जो तमाम लोग अभी तक भी बैठे हुए हैं और तमाम लोग जो आज आए, हमारे डिसीजन मेकर्स, हमारे ब्रांड के जो प्रोफेशनल्स हैं, ओनर्स हैं, इकोसिस्टम के तमाम लोग हैं, इंडस्ट्री के, एकेडेमिया के, आप सबका बहुत शुक्रिया। और आप लोगों की वजह से ही इस तरह के कॉन्फ्रेंस और इवेंट्स कामयाब होते हैं, बिकॉज ये हमारा पीपल बिजनेस है और ज़ाहिर है इसको हमारे लोगों और आप लोगों के बगैर ये रिटेल सेक्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सर्विसेज का सेक्टर है। तो मैं समझता हूँ कि जो भी जितने भी लोगों ने आज अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, एक दूसरे से सीखा, नेटवर्किंग की, शायद कुछ इससे बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ भी बनेंगी काफ़ी लोगों के लिए। इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है, बिकॉज हमारा काम ही यही है एज ए चेन स्टोर एसोसिएशन पाकिस्तान के, हम लोगों को कनेक्ट करें और सबको आगे लेके चलें। ना सिर्फ रिटेलर्स को, हमारा काम ये नहीं कि हम 150-200 रिटेलर्स को सिर्फ उनको ऊपर तक पहुँचाएं, हमें तो इस इकोसिस्टम को साथ लेके चलना है और हज़ारों रिटेलर्स को पाकिस्तान के अंदर कामयाब करना है और पाकिस्तान से बाहर लेके जाना है। जो हमारी नीड है, इस हमारे मुल्क की ये एक नीड है कि हम बाहर जाएं और बाहर से हम इनकम और अपॉर्चुनिटी जनरेट करें इस मुल्क के लिए और हमारे लोगों के लिए। इसके साथ साथ मैं ये जो हमारे जो स्पीकर्स थे तमाम, उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। इस्लाम शौकी साहब आए थे फ्रॉम पेमॉब ऑल द वे फ्रॉम इजिप्ट, हिज टीम वाज हियर। तमाम पाकिस्तान से, कराची से, इस्लामाबाद से, लाहौर से, हर जगह से काफ़ी हमारे लोग रिटेलर्स दूसरे शहरों से भी आए हुए थे। बट स्पीकर्स का मैं ख़ास शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ तमाम लोगों का, बिकॉज दे रियली टुक आउट टाइम और उन्होंने अपने एक्सपीरियंस और एक्सपोजर का हमें उसका फ़ायदा पहुँचाया। फिर हमारे अलॉन्ग विद स्पीकर जो पैनलिस्ट थे तमाम अच्छे खासे लोग थे, उसमें बहुत सारे लोग थे, कुछ इसी काम के लिए आए थे लाहौर और या उन्हें टाइम निकाला। यासिर साहब जैसे कि संटोर से आए हुए थे, he drove especially from Islamabad and got here just in time just for this and he will be heading back. फैसल साहब हमारे डॉलमेन ग्रुप के
नॉट फीलिंग वेल, बट स्टिल उन्होंने कहा कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है लेकिन मैं जूम पे तो आ ही जाऊँगा अगर मैं फिजिकली नहीं आ सकता। इस तरह के और बहुत लोग हैं जो कि आज पैनल में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। हमारे वैसे तो एग्जिबिटर्स भी अलहमदिल्ला 30+ हमारे एग्जिबिटर्स थे, और वो सबसे ज़्यादा इनोवेटिव सोल्यूशन जो पाकिस्तान में है रिटेल इकोसिस्टम में, वो उन्होंने एग्जिबिट किया। एंड आई थिंक काफ़ी एक्टिविटी थी, और एग्जीबिशन से ही मेरे ख्याल में एनर्जी हमें इस कॉन्फ्रेंस में भी अच्छी खासी मिली है, जो कि आई थिंक हम इसको और एक्सपेंड करेंगे। और एग्जिबिटर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। साथ में जो हमारी जो एकेडमिया से लोग आए हुए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ब्रिज करें इस गैप को, और एकेडमिया को साथ साथ लेके चलें। हमारे पास यूनिवर्सिटीज़ आई हुई थी, लम्स से, सुपीरियर से, यूएमटी से, रेपा से, और भी लोग जहाँ आए हुए थे, तो उनका बहुत शुक्रिया। और आगे हम इसको कोलैबोरेशन को आगे बढ़ाएंगे। जो हमारे पार्टनर्स थे, स्पेशली आई वुड लाइक टू मेंशन प्रॉफिट मैगजीन, जिन्होंने बहुत आपके पास एक फिजिकल कॉपी आई हुई होगी ऑफ द स्पेशल एडिशन फॉर दिस समिट, वो आप ज़रूर लेके जाइएगा। ये एक फर्स्ट स्टेप है टू पब्लिश कंटेंट अबाउट रिटेल जो कि रेलेवेंट हो तमाम लोगों के लिए। एंड आई थैंक देम फॉर ऑल देयर पार्टिसिपेशन, एंड अरीबा, बाबर, तैमूर, तमाम लोग जो जो थे प्रॉफिट की टीम में। और साथ साथ सिमेट्री की टीम जो थी वो बहुत उन्होंने अबव एंड बियॉन्ड गए हैं, और बहुत उन्होंने हमें सपोर्ट किया है। ऑल द कंटेंट यू सी अराउंड यू, ऑलवेज फ्रॉम द ब्रांड्स, बट पुटिंग इट टुगेदर टुक अ लॉट, एंड आई थिंक दे डिड अ फैंटास्टिक जॉब अलोंग विद द टेररिस्ट टीम। जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, मोस्ट ऑफ ऑल, आई थिंक उनके बगैर तो ये काम हो ही नहीं सकता था। एग्जीबिशन तो हो ही नहीं, इवेंट कॉन्फ्रेंस और एक्सपो हो ही नहीं सकता था, बिकॉज वी नीडेड टू इंश्योर कि ये वायबल हो। तो स्पॉन्सर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे टाइटल स्पॉन्सर्स, पार्टनर्स। बेसिकली मैं तो लोग स्पॉन्सर कहते हैं, मैं तो खैर पार्टनर समझता हूँ इन सबको। स्विफ्ट लॉजिस्टिक्स ने आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया, नॉट जस्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, बट ऑल्सो टू वर्क विद अस मूविंग फॉरवर्ड एंड गिव आइडियाज एंड फीडबैक। साथ में एल्गो was also a key partner in this platinum sponsor थे, और भी sponsors हैं, आपको यहाँ नाम सारे नजर आ रहे हैं। I don't want to take up all your time, but I think they're all, each and every one of them are important for 2022. और निशात होटल का मैं बहुत खुशगुजार हूँ, because they were the hospitality partners, and all you have experienced today in these halls is because of निशात होटल, and I hope you enjoyed the food. चाय शाय ऊपर नीचे अगर वो भी गई होगी, आप माफ़ कर दीजिएगा, हमें भी, उनको भी, बट हमारी पूरी कोशिश थी, एंड आई थिंक दे डन अ वंडरफुल जॉब एज हॉस्पिटैलिटी पार्टनर्स। एंड ये मैं जैसे जो हमारे मीडिया हाउसेज हैं, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, एंड आई थिंक दे विल हेल्प पुट आवर मैसेज एज एन इकोसिस्टम फॉरवर्ड इंशाल्लाह टू द पीपल हु आर नॉट हियर टुडे। उनके पास मेरे ख्याल में मैसेज पहुँचने चाहिए तमाम जो आज बातें हुई हैं। आखिर में मैं जो हमारे जो host and a master of ceremonies, Sana Mela, I think she did a fantastic job, and of course Nayan Mirza, who I think was as well, and they did a wonderful job in hosting and taking things together and keeping things together and flowing. Terrabiz का मैं बहुत as बतौर representative of Chain Store Association बहुत शुक्रगुजार हूँ। They have, all you see around you is partnership with them, co-organizers. उन्होंने बेहतरीन काम किया। Hamza Hashmi, CEO, and his fantastic team, Faisal, Talha, Nayan, Izar, Hamad, Obed, and all the volunteers who were here today. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। I'd like you to give them all a big hand, please. और फिर अगेन मैं ये बात कहूँगा आखिरी कि कैप के जो और रिटेल की कम्युनिटी के तमाम लोग, इंक्लूडिंग रिटेलर पाकिस्तानी की भी टीम आई हुई थी, और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया। तमाम रिटेल कम्युनिटी को, तमाम रिटेल ब्रांड्स को का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सब आए, वक्त गुजारा, आपने टाइम निकाला, और फिर कुछ फ़ायदा भी हुआ, बट योर प्रेजेंस और आप एक एक जो आप लोग बैठे अभी तक, शायद कुछ लोगों को कहने की वजह से भी, लेकिन आप रुके हुए हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी भी आपने कहीं नहीं जाना, लेकिन शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों का, एंड आई फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। चेयरमैन साहब, मैं तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि स्टेज पे आ जाएं, एक ग्रुप फोटो हो जाए। जिन्होंने इतना सब्र किया उनको कोई फल तो मिले। जी बिल्कुल, आइए। एंड थैंक यू वेरी मच। वी क्लोज 422, इंशाल्लाह सी यू एट 423 अक्टूबर इंशाल्लाह। उससे पहले भी चीज़ें करते रहेंगे, बट आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच टू ईच वन ऑफ यू एंड एवरीबॉडी हु अटेंडेड टुडे। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।